In the next part, we'll be doing with the appreciation of the poem. We all know that appreciation of the poem carries 5 marks. 1 mark is for the title and the poet. 1 mark for rhyming scheme. Figure of speech carries 1 mark, and theme or central idea carries 2 marks. And remember one thing, appreciation for the higher level is always written in the paragraph format. So here we have the appreciation of the poem. The poem Knight of the Scorpion is written by Nazim Ezekiel. He published this poem in his 5th book, The Exact Name, in 1955. The poem is an example of free verse containing 7 stanzas and 47 lines. 7 to 8 stanzas. We have taken 7 stanzas. You will just count it. Here it's written 8. So please make a change. It would be 7 stanzas. It has 47 lines. This is about the rhyme scheme of the poem, and the poem follows the narrative style of story writing. जब poem story type में है तो उसको हम narrative style बोलते हैं. The poet has used many figures of speech. बहुत सारे figures of speech use की हुई है इसमें, like alliteration, simile, hyperbole, then personification, onomatopoeia. यहाँ पर हम सारे फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम देंगे और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर लाइन को फिगर ऑफ स्पीच के साथ एक्सप्लेन करते हैं. सो आई हैव चोजन दिस लाइन, बस द नेम ऑफ गॉड 100 times to paralyze the evil one. In this line, the evil one is compared with the scorpion and hence it is metaphor. This was the figure of speech, and the last is the central idea or the theme of the poem. तो थीम हम यहाँ पे दे रहे हैं. द पोएम स्टार्ट्स इन अ हाउस एट नाइट वेयर इट इज़ रेनिंग एंड अ स्कॉर्पियन in order to take some shelter comes to the house of the poet. This poem is about how the scorpion stung the poet's mother. Poet की मदर को कैसे उसने काटा. How his mother struggled against the poison. उसकी माँ 20 घंटों तक उस poison से struggle करती रही, तड़पती रही. And it's also about the villagers who, without thinking, the mother's condition shows their less knowledge and how his father tries to reduce his mother's pain by doing some logical and rational things. Villagers जो हैं वो कुछ भी knowledge नहीं है उन लोगों को, वो लोग अपने पुराने तरीके superstitions लगा रहे हैं और उसके father ने अपने logical rational thinking के द्वारा अपने methods लगाया. सभी की कोशिश यही थी कि उसकी मदर बच जाए, बट एवरीथिंग सीम्स वर्थलेस. लेकिन किसी भी चीज़ का असर उसके ऊपर तब नहीं हुआ और आखिर में 20 घंटे के बाद में उसकी मदर ठीक हुई. एंड व्हेन द मदर वाज नॉर्मल शी सेड, एट लास्ट इट शोज द मदर्स लव फॉर अर चिल्ड्रेन व्हेन शी थैंक्स गॉड फॉर स्पेयरिंग देम. बच्चों को गॉड ने बचा दिया और मदर को स्कॉर्पियन ने काटा, इसके लिए वो गॉड को थैंकफुल है. सो दिस इज हाउ वी राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. And this is a compulsory question of 5 marks in your paper. This is question number 4B. Sorry, it's not 4B, it's 3B. So please see that you all prepare for the appreciation of the poem very nicely for all the poems. That's all for today. Thank you. Have a nice day.